Hello, hello. I think there is some. Oh sorry, मैंने अपनी स्ट्रीम को ऐड नहीं करा था इन द स्टेज। मैंने जो स्क्रीन शेयर करी थी वो भी जस्ट 1 मिनट यार, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, मैंने अपनी स्ट्रीम को स्टेज में ऐड नहीं करा था, खुद को भी स्टेज में ऐड नहीं करा था, तो ना मेरी आवाज़ आ रही होगी ना, और ना ही मेरी स्क्रीन आ रही होगी। सो ओके, मैं बेसिकली बात कर रहा था कि आज हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का रिवीजन करेंगे। एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के रिवीजन के बाद वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन फ्रॉम वर्कबुक। ओके, और जो क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने कर रखे हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, जो वर्चुअल मेमोरी कर रखी है, राइट, वर्चुअल मेमोरी कर रखी है, और मेमोरी मैनेजमेंट कर रखा है, ठीक है, और हमने प्रोसेस एंड थ्रेड्स कर रखा है, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस कर रखे हैं। बेसिकली ये सारे हमने इनके वर्कबुक कर रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे जो सही थे, मैंने चेक करे सॉल्यूशंस, तो सही थे। कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि अगर वो गलत है तो उनके सही सॉल्यूशंस वगैरह क्या होंगे, ठीक है। एंड अभी मैं कुछ दिन तक, आज मुझे 3 बजे आना था, बट मैं 7 बजे आया हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो मैं कल से 3 बजे आऊँगा। और अभी मैं सुबह का रिवीजन नहीं आ रहा हूँ, रिवीजन में इसी में एक ही स्ट्रीम में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ बैकलॉग कवर करने के उसमें हूँ। मैं कुछ बैकलॉग कवर कर रहा हूँ। वंस माय बैकलॉग इज कंप्लीटेड एंड आई हैव फिनिश सम गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ subjects, then I will start revisions in the morning and in the afternoon for practice, ठीक है। सो अभी का स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में काफी देर से 10 मिनट से बताया जा रहा था। तो प्रोसेस, there are two types of process: cooperative and independent. Cooperative means the process is affecting by some other process. अगर कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज द कोऑपरेटिव प्रोसेस। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द अफेक्टेड। अगर मान ले P2 का रिजल्ट कैन अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेस, दैट इज द कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, राइट, आइसोलेशन में। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। सो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता दो प्रोसेस के बीच में, क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। और उसके बाद मैंने बात करी थी प्रॉब्लम अराइजेस नॉट हैविंग द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। जब दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो क्या हुआ? Let's assume the producer and consumer. So here are the producer, here are the consumer, and the count is 3 and n is 2. Means n is 8 means the size of the buffer, right? Total 8 item can store in the buffer, ठीक है। Count is the variable used by the producer and consumer to identify how much items in the buffer at any particular point of the time. N is the variable used by the producer to produce the item to identify the next empty slot in the buffer. Out is a variable to identify to used by the consumer to identify उसको कहाँ से कंज्यूम करना है। सो बेसिकली ये लिखा हुआ है, सेम चीज, ठीक है, दिस इज द सेम चीज। और कैसे करेगा प्रोड्यूसर? जस्ट वेरिएबल item, or this is the infinite condition. This is the like, if count is equals to n, what does it mean? It means the number of items in the buffer is 8, means the buffer is full, or buffer is full, then producer should not allow to produce the items, so that's why it will fall in the infinite loop. Then the buffer, if the buffer is not full, it can produce the item and move the into the next, ठीक है, and it will circular in 0 to 8, 0 to 7, 0 to 7. That's why we are using mod, and increase the count means number of items in the buffer increased by 1, and here number of items in the buffer is decreased by 1 because the consumer is consuming that, same thing, ठीक है। So these things I have already discussed. So two conditions, अगर बफर फुल है तो प्रोड्यूसर अलाउड नहीं होना चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, अगर एम्प्टी है तो कंज्यूमर अलाउड नहीं हो जाए कंज्यूम करने, बिकॉज क्या ही कंज्यूम करेगा जब है ही नहीं है। यूनिवर्सल अजम्पशंस क्या है? यूनिवर्सल अजम्पशन ये है, कोई भी रनिंग प्रोसेस है कैन बी प्रेम्प्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। उस जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद ही प्रेम्प्टेड होगा,
ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल एजम्पशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी थिंक समथिंग. आई एम थिंकिंग कि uh, मैं ये यहाँ थिंक कर रहा हूँ कि जो कॉमन वेरिएबल है, जो कॉमन वेरिएबल है, एक तो बफर है और काउंट है. ये ये इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? यहाँ लिखा हुआ है द इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, राइट? द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर नॉट प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड, so while sharing the common variable count, hence it is leading to the problem of inconsistency. कैसे प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी आ रही? लेट थिंक okay. So understand this. Okay, so this is the initial structure. The buffer size is n 8, and the number of items in the buffer is 3, and in is set to be 3 and out is set to be 0. ठीक है. uh, let's suppose producer, let's run the producer first. ठीक है, producer, this, okay, it will run this count equals to 3. Okay, it will go, not count not is equals to n buffer, so it will produce some item, let's suppose xyz a, it will produce a and increment by 4. ठीक है, increment by 4. ठीक है, और count will okay. ठीक है, दिस कैन टोटली चल सकता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. ए एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 4. ठीक है, और वो हो जाएगा. अब हम कंज्यूमर को रन करें, उसने यहाँ से कंज्यूम करा. ठीक है, और आउट को 1 से इंक्रीमेंट करा और इसको 1 से डिक्रीज करा. ठीक है, और समथिंग. अब हम थोड़ा प्रिम्प्ट करके देखते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज बफर एंड, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस सम आइटम बी. ठीक है, another, this condition false, it will produce item in fourth and it will increment by 5. ठीक है, okay, increment by 5. Okay, these are the micro instruction inside the this instruction, right? These are the micro instruction, how the count is incrementing. So basically these are the macro instructions, basically loading the count value into the register, increment the register value and restoring back to the count. ठीक है, this is simple. So okay, now here we have not incremented the count, right? After this in in is 6. ठीक है, the producer is producer is preempted, preempted, right? Producer is preempted, and it is seeing the number of items in the buffer is 3, but actually it is 4. Okay, let's see, let's run this consumer, let's run the consumer, because the presumption is the temporary stop. ये जब कंटिन्यू करेगा तब इसको इसको एग्जीक्यूट करेगा. ओके, ओके, काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, it will consume the item, it will consume the item. ठीक है, it will consume the item from the buffer. Let's suppose this will consume this item. ठीक है, it will consume the item. ठीक है, from the buffer. अब out is increment by 2, count is decrement by 2. ठीक है, count is decrement by 2, and this is completed by. ठीक है, after this, after this Mhm.
सो बेसिकली जो हमने इससे पहले करा था वही था कि जब नंबर ऑफ आइटम्स इन द बफर इज 4, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वो। इट इज सेइंग नंबर ऑफ आइटम्स इन द व्हेन द कंज्यूमर विल रन, so it will check the count, right? So number of items in the buffer is 4, it is saying 4, but actually it is not true, right? Number of items in the buffer, uh, it will say 3 but actually in a 4, so this is not properly synchronized. ठीक है। मैं और एक एज केस की सोच रहा हूँ कि yeah, this is how it's not synchronized, that's why the inconsistency problem can occur, right? uh, okay, let's understand the printer spooler डेमोन, प्रिंटर स्पूलर डेमोन। ठीक है, यूजिंग दिस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और सिंक्रोनाइजेशन अगर दो प्रोसेसेस के बीच में फॉलो नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और उसके बाद सोल्यूशंस देंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस एंड देयर इज द प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर स्पूलर डेमोन एक प्रिंटर है। बेसिकली क्या होता है, इन बैंक में भी तुम देखोगे कि मल्टीपल एम्प्लॉयज आर शेयरिंग द सेम प्रिंटर। ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉयज आर द शेयरिंग द सेम प्रिंटर। ठीक है, किसी अब प्रोसेस आप किसी एम्प्लॉय E1 ने कोई प्रिंट मारा, किसी एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय E2 ने कोई दूसरा प्रिंट मारा, तो प्रिंटर को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रिंट करना है कौन सा। ठीक है, प्रिंटर को कैसे पता चलता है, तो बेसिकली प्रिंटर विल यूज द स्पूलर डायरेक्टरी, SD। स्पूलर डायरेक्टरी में बेसिकली चीजें आती जाती हैं इन द सेम ऑर्डर द प्रिंटर विल प्रिंट। ठीक है, so let's suppose here is the same, the in and out variable, in variable, and this is the spooler directly। वहां पे पीछे हमारा बफर था, दिस आर द प्रोसेसेस, दिस आर द प्रिंटर। ठीक है, सो इन इज अ वेरिएबल यूज बाय ऑल द प्रोसेसेस बेसिकली। ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
Okay, sorry for the interrupt. I think I am audible and my screen is I have added to the screen and okay both. Okay, let's sorry. Uh, so printer is spooler timer. So there are the processes, there are the printers. So in is the variable used by the processor, all the processor to identify the next empty slot. Basically जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना होता है, राइट, द एम्प्लॉयज के द्वारा जो उनके सिस्टम्स होते हैं, दैट आर द प्रोसेस, राइट। तो उनका एक स्पूलर डायरेक्टरी में कौन सी जगह पे उनके उसको बुक करना है। बेसिकली प्रिंटर हैव दी डायरेक्टरी, स्पूलर डायरेक्टरी, जहाँ पे वो स्टोर करता है कोई भी कोई भी अपन प्रिंटर को प्रिंट करने की कमांड मारते हैं तो वो पहले स्टोर करता है, राइट। ठीक है, कि कौन सा क्या डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रिंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। सो इन द वेरिएबल यूज्ड बाय द ऑल द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट इन द स्पूलर डायरेक्टरी। स्पूलर डायरेक्टरी के अंदर कौन सा नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट है। आउट क्या है, आउट इज ऑल्सो वेरिएबल यूज बाय द प्रिंटर टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रिंट, कौन सा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, वेयर इट इज हैज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज क्या हुए, एक तो स्पूलर डायरेक्टरी हुई, एक तो इन वेरिएबल हुआ। देयर आर द टू शेयर्ड रिसोर्सेज हियर। देयर आर द स्पूलर डायरेक्टरी जो कि प्रिंटर और प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, एंड इन वेरिएबल, ठीक है। इन वेरिएबल जो इतने सारे प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, राइट, इतने सारे प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, आउट नहीं हो सकता है, आउट वेरिएबल तो इज ओनली यूज बाय द प्रिंटर, बट इन वेरिएबल इज यूज बाय द बहुत सारे प्रोसेसेस के द्वारा इन वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स डू द एनालिसिस। सो बेसिकली ये फाइल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है कि क्या होता है। There are initially the in is three, basically already three files in the spooler directory, abc, a dot doc, b dot docs, c dot docs, and out is also a variable, so initially pointing to the zero, zero means प्रिंटर को यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड ओके, सो बेसिकली कैसे प्रोसेसेस पता करते हैं कि कौन सा स्कूलर डायरेक्टरी के अंदर स्लॉट्स अवेलेबल है। सो ये थ्री माइक्रो इंस्ट्रक्शन, चार माइक्रो इंस्ट्रक्शन है इसके बीच में। मीन्स पहले तो इनकी वैल्यू को लोड करते हैं एक रजिस्टर आर आई में, रेस्पेक्टिव प्रोसेस रजिस्टर, ठीक है। जो भी उस प्रोसेस का रजिस्टर होगा उसमें इन वेरिएबल की वैल्यू को लोड करते हैं। अब क्या करते हैं, स्पूलर डायरेक्टरी के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन में एस ऑफ डी स्टोर एस स्पूलर डायरेक्टरी, उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी रजिस्टर है उसकी वैल्यू, उस फाइल नेम को, उसका फाइल नेम, ठीक है, उसका फाइल नेम, जैसे सी डॉट डॉक्स, बी डॉट डॉक्स, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट करते हैं रजिस्टर की वैल्यू को और फिर स्टोर करते हैं रिजल्ट उसको इन में। सो बेसिकली चार, ठीक है, macro instructions। Let's do the analysis, ठीक है। Let's do the analysis। There are the two processes, P1 and P2। P1 P1 wanted to print the documents XYZ, and P2 wanted to print the documents PQR, ठीक है, ठीक है। This is the ready queue, ठीक है, they are the ready, अरे यार, ठीक है, रेडी, ठीक है। लेट्स डू द एनालिसिस, ठीक है, लेट्स डू द एनालिसिस। So initially, just 1 minute। Okay, sorry for the interrupt, ठीक है। So this is the shared resources and this is the analysis, ठीक है। Let's do the analysis। एनालिसिस में क्या था कि ओके, द प्रोसेस P1, ठीक है, प्रोसेस P2, दिस आर द रेडी क्यू। सो लेट्स प्रोसेस P1 आया, इन वेरिएबल इज थ्री, राइट।
प्रोसेस इन वेरिएबल इज 3। सो R1 रजिस्टर R1 में 3 लोड हुआ, ठीक है, 3 लोड हुआ, ठीक है, 3 लोड हुआ, ठीक है, प्रोसेस 3 इंस्ट्रक्शन लोड हुआ। इंस्ट्रक्शन 2 क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन 2 ये हुआ कि इंस्ट्रक्शन 2 में क्या हुआ कि एक्स वाई जेड को स्टोर करो उसके लोकेशन में। तो इस हमने एक्स वाई जेड स्टोर कराया, देखो यहाँ पे स्टोर करा है एक्स वाई जेड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 3 आर की वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। तो मैंने रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, रजिस्टर की वैल्यू मैंने कर दी 4, ये हो गई 4, ठीक है। वी आर डूइंग द एनालिसिस, वी आर डूइंग द एनालिसिस। इंक्रीमेंट करा मैंने, रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, ठीक है। और और क्या हुआ, यहाँ पे मैंने स्टोर करने से पहले, मतलब बेसिकली इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू को वापस स्टोर करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे ही ये प्रेम्प्ट हो गया, इट इज प्रेम्प्टेड, प्रीएम्प्टेड, ठीक है। मींस इनको द्वारा से मॉडिफाइड, मतलब रजिस्टर की वैल्यू में इंक्रीमेंटेड वैल्यू पड़ी है, उसको इसको इंक्रीमेंट नहीं करा, 4 नहीं करा, उससे पहले ही मैं प्रीएम्प्टेड हो गया। अब मैंने प्रोसेस P2 चलाया, प्रोसेस P2 का मैंने R2 में जो भी आएगा उसकी इनकी वैल्यू वैल्यू 3 है, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या होगा, स्टोर करो। अब ये इसकी जगह पे डॉक्यूमेंट्स पी क्यू आर डॉट डॉक्यूमेंट्स डाल देगा, ठीक है, पी क्यू आर डॉक्यूमेंट्स डाल देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, ये अपनी 3 की वैल्यू 4 करेगा, ठीक है, 3 की वैल्यू 4 करेगा। और इंक्रीमेंट अगर मान लो अगर इंक्रीमेंट भी करता है तो यहाँ आ जाएगा 4 4 4, ठीक है। इसके बाद लेट सपोज दिस इज कंप्लीटेड अवर ऑल द एग्जीक्यूशन P3 एंड P4, ठीक है, इट इज कंप्लीटेड। आफ्टर दैट यहाँ पे जो P3 कंप्लीट होने के बाद ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे जाएगा, और सॉरी प्रोसेस P1, और इसकी जो 4 थी वो दोबारा से यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश कर, 4 तो ऑलरेडी है ये। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे डेटा लॉस हो गया, मतलब प्रोसेस P1 की जो फाइल थी XYZ वो ओवरराइट होगी प्रोसेस P2 की फाइल से PQR डॉट उसके वजह, बिकॉज बिकॉज जो इन वेरिएबल है ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं है, दिस इन वेरिएबल इज नॉट प्रॉपरली सिंक्रोनाइज, बिकॉज ऑफ दैट द लॉस ऑफ डेटा, डेटा का लॉस हुआ है, राइट, loss of data, ठीक है, loss of data, the process are not properly synchronized while sharing the common variable in, hence it is leading the problem of data loss, इसकी वजह से डेटा लॉस भी हो रहा है। नंबर 3, इट कैन गो इनटू द डेडलॉक। बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा लॉस की प्रॉब्लम आई है, इससे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी इस वाले में, इस वाले में जो प्रॉब्लम आई थी वो थी इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, यहाँ पे डेटा लॉस की प्रॉब्लम। डेडलॉक क्या होता है, इफ द प्रोसेस आर नॉट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड बाय द शेयरिंग द कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेसेस सही से प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं है while sharing the common variable or the common resources, then it also possible for deadlock, ऐसा भी हो जाता है कि it is also possible for the deadlock, these 3 problems are coming, right, डेडलॉक भी हो सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस। सो बेसिकली द क्रिटिकल कंडीशन, द क्रिटिकल सेक्शंस, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशंस, ठीक है, ये चीजें डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं, क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन, व्हाट इज द नॉन क्रिटिकल सेक्शन, व्हाट इज द रेस कंडीशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। Let's understand the critical section. So basically just basic theory, basic very simple theory is there, the portion of the program, कोई द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर द शेयर्ड वेरिएबल हो या शेयर्ड रिसोर्सेज विल बी प्लेस्ड, कि प्रोग्राम का द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड वेरिएबल और द शेयर्ड रिसोर्सेज इज प्लेस्ड, जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल और द शेयर्ड रिसोर्सेज है उस पार्ट, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वी विल से द क्रिटिकल सेक्शन। जैसे काउंट, काउंट इज द शेयर्ड वेरिएबल इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है। नॉन क्रिटिकल क्या होता है, नॉन क्रिटिकल मतलब जहाँ पे कॉमन वेरिएबल और कॉमन रिसोर्सेज नहीं है, द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर द इंडिपेंडेंट कोड ऑफ द इन प्रोसेस विल बी प्लेस्ड, जैसे ये इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और भी है, ठीक है।
वी आर टॉकिंग इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है। रेस कंडीशन क्या होती है? रेस कंडीशन ये होती है कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स टू प्रोसेसेस आर शेयरिंग द सेम कॉमन वेरिएबल, तो जो फाइनल वैल्यू होगी, द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट कॉमन और दैट शेयर्ड वेरिएबल, it depends on the sequence, the execution sequence of the program. Means execution sequence पे depend कर रहा है, that is the race condition. The final value of the any variable depends on the execution sequence of the program. This type of condition is called the race condition. To avoid the problem of race condition, only one process should be allowed into the critical section. हाँ, कि जब कॉमन वेरिएबल होगा, तो अगर जो कॉमन और जो शेयर्ड वेरिएबल होता है, अगर शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, तो रेस कंडीशन क्या करती है, कि जो फाइनल वैल्यू होगी उस वेरिएबल की, ये डिपेंड करती है द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और इसको अवॉइड करने के लिए रेस कंडीशन को अवॉइड, इस चीज को रेस कंडीशन बोलते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्रिटिकल सेक्शन में ओनली एक एट अ टाइम ओनली एक ही प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, दीज आर द सम प्रोग्राम्स, ठीक है, here are the x, these are the also some program, here is some common variable x. तो बेसिकली लेट्स x is readed and preempted, उसके बाद ये चला, उसने भी x रीड करा और प्रेम्प्ट कर गया, ठीक है। तो दोनों ने x को रीड करा है, सेम वैल्यू रीड करी। आफ्टर दैट ये कुछ भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करे और लास्ट में ये प्रोसेस P2 फिनिश हुआ है, तो ये P1 है, ये कुछ भी x के ऊपर इंस्ट्रक्शंस करे, ठीक है, ऑपरेशंस करे, लेकिन ये P2 ने जो वैल्यू रीड करी है, इसकी अपडेटेड वैल्यू रीड नहीं करी है P1 की, इसने इसकी ये वाली वैल्यू रीड करी है, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद ये कुछ ऑपरेशन x पे करेगा, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू ऑफ x होगी डिपेंड्स ऑन द P2, द एग्जीक्यूशन मीन्स P1 के बाद P2 चला है तो P2 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। दिस इज द रेस कंडीशन। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ओनली एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस रहना चाहिए, जिससे मतलब अगर ये P2 इस वैल्यू को रीड करता है तो अपडेटेड वैल्यू रीड करे, ठीक है, अगर या ये रीड करता है तो इसकी अपडेटेड वैल्यू रीड करे, ठीक है, ये चीज है। तो द कंडीशन टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, there are basically four conditions. Number one is mutual exclusion, ME। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है नो टू प्रोसेसेस में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। मींस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो नो टू प्रोसेसेस में साइमल्टेनियसली कोई भी दो प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं हो सकते। ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन reside, only one process can be allowed, that is the mutual exclusion। means mutual exclusion satisfy होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम ओनली एक प्रोसेस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कैसे भी करके तुम ले आते हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस ये है कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स द क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो अलाउड होना चाहिए, दैट इज द प्रोग्रेस, राइट। सो नो प्रोसेस रनिंग outside the critical section should block in other interested process from entering into the critical section when critical section is free। means the critical section is free, no process running outside the critical section, outside no process running, जो भी मतलब critical section से कोई भी बाहर जो भी processes हैं should block, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक इन अदर, ओके, कोई भी नो प्रोसेस इज रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर रन कर रहा है, नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक, वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए किसी अदर प्रोसेसेस को जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। जबकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है बट
क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, कोई प्रोसेस P1 wanted to go into the critical section, but process P2 is blocking, process P2 is blocking P1 to going into the critical section. It should not be there. अगर प्रोसेस प्रोग्रेस है महीज, कोई भी अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो वह अलाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दूसरे प्रोसेस की वजह से वो नहीं जा पा रहा हो, किसी दूसरे प्रोसेस ने उसको ब्लॉक करके रखा हो। ठीक है, नंबर वन, if there is only one progress trying to enter into the critical section, then it will be definitely allowed to enter in the critical section. अगर ओनली कोई एक ही प्रोसेस है, या हम दूसरी बात ये बोल सकते हैं, कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो डेफिनेटली इट शुड अलाउ, राइट, डेफिनेटली इट शुड अलाउ इनटू enter the critical section. If two or more processes are trying to enter into the critical section, then one process should be definitely, अगर दो या दो से ज्यादा या कितने भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, बट एट लीस्ट नहीं सॉरी, एक ओनली वन प्रोसेस शुड डेफिनेटली, एक प्रोसेस को कम से कम तो चांस मिलना ही चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में, दैट इज द प्रोग्रेस। ठीक है, दिस इज द प्रोग्रेस। बाउंडेड वेटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग, ओके, ये पेज सही नहीं आया है, ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट 1 minute। ओके, ठीक है। सो बाउंडेड वेटिंग क्या होता है? बाउंडेड वेटिंग मीन्स कि कोई भी प्रोसेस की जो वेटिंग है क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो वेट कर रहा है, दैट शुड बी बाउंडेड। ऐसा नहीं चाहिए कि वो इनफाइनाइट समय तक वेट ही करे जा रहा है, 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 और उसको क्या कहते हैं, वही नहीं मिल रही है, उसको क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल रहा है। सो नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉर एवर टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन, राइट? So there should be a bound, there should be a bound with respect to, there should be a bound with respect to, मतलब after how many number of process, how after how many number of process on getting the chance to enter the critical section। ठीक है, some processes indefinitely waiting to enter into the critical section because the critical section is always busy by some other process। This situation should not arise, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस को indefinitely वेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि critical section is always busy by some other processes। so ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। if the bounded waiting is not satisfied then it is possible for the starvation। अगर बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही, स्टारवेशन क्या है कि कोई प्रोसेस को इंडेफिनिटली वेट करना पड़ रहा है, दैट इज द स्टारवेशन ओनली, राइट? सो दिस इज द, तो बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रोग्रेस सेटिस्फाई, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए इट शुड बी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। एंड नंबर फोर था, यहाँ पे आया नहीं है, पर नंबर फोर ये था कि यूनिवर्सल अजम्पशन था रिलेटेड टू द हार्डवेयर समथिंग, राइट? कि जस्ट 1 minute, लेट मी चेक। हाँ, फोर्थ पॉइंट था नो अजम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसर स्पीड। नो अजम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसर स्पीड। हार्डवेयर और प्रोसेसर की स्पीड्स को लेकर हम कोई भी अजम्पशन नहीं करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्लर्ड है, ठीक है? तो मैं यहाँ यूज करूँगा इसको थोड़ी देर के लिए, ब्लर है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सॉल्यूशन
ठीक है। सो सीमाफोर, अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज सीमाफोर, ठीक है। सीमाफोर, सीमाफोर, ठीक है। तो सीमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड बाय द, सो सीमाफोर क्या है ना, एक इंटीजर वेरिएबल है यूज्ड बाय द वेरियस प्रोसेसेस इन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर, यूज्ड बाय द, सीमाफोर इज an integer variable used by the various processes in mutual exclusive manner to achieve synchronization. अब गले में दर्द हो रहा है, I'm feeling pain. Just 1 minute. Okay, just a small break of 5 minutes only. Okay, just a small 5 minute break. Uh, we are taking just a small 5 minute break. Okay? So this is right.
Okay. Hello. I think I am audible. Yeah. Small break is over. Let's start. Uh, let's start. यहाँ पे भी हम थे वहाँ से ठीक है. Okay. So let's start. So we are discussing about the solutions, the operating system solution. The first solution is the semaphore. Okay. The first solution is the semaphore. Uh, okay. I think now my screen is going. Okay. This. Okay. The first solution is the semaphore. So semaphore is a integer variable. I think ये वाला थोड़ा blur पेज आया है. Should I take again? Yeah, it is very important page. So give me just 2 more minutes तो दोबारा से मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ. पेज सही नहीं है. ठीक है. और एक और इसमें पेज गड़बड़ है. एक ये पेज गड़बड़ है. एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट. ओके. लेट मी मॉडिफाई द पीडीएफ. कैन आई मॉडिफाई? Yeah, modify screens, right? Yeah, I can. So this is the. So just 1 minute. मैं इसको डिलीट करके इसको रिप्लेस करता हूँ. ठीक है. यहाँ पे इसको रीटेक करते हैं. ठीक है. So yeah, now this is good. And उसमें इसके बाद एक पेज और था. 6 is now good. 7, 8. Okay, this one. After the binary semaphore, right? After the binary semaphore. Hmm, this one. Let me record it. Okay, now everything. Just saving and sharing. So just 1 minute. Okay. I'm deleting this one and getting new one. Okay. Unable to modify. What the fuck it is? Mm-hmm. Okay. Okay, almost over.
Okay, let's add to this into the stage, and I think audio and everything is okay, right? Okay, good. So here, sorry for just yeah. So this one, operating system, the solution, the semaphore. It is the semaphore. This is very very important, very important, very important. We will understand based on this in entire process synchronization we can able to solve the problems, and most of the problems will come from the process synchronization from the only the semaphore, right? So this is very important topic, right? The semaphore is the integer variable used by the various processes to used by the various processes. Semaphore is the variable, integer variable. Semaphore is the integer variable used by the various processes in mutual exclusive manner, in the mutual exclusive manner to achieve synchronization. Very simple definition, ठीक है? Improper, and also the improper use of the semaphore will give you the wrong result. Improper uses of the semaphore also give the wrong result, ठीक है? So semaphore categorized into two types: the counting semaphore and the binary semaphore. The counting semaphore, that is binary semaphore. What is the counting semaphore? The value of the counting semaphore, it can anything minus infinite to plus infinite, but the binary semaphore, the name suggests only the two values, zero, either one or two, one or zero. There are two different operations performed in the semaphore. Basically two different operations, the down operation and the up operation. डाउन ऑपरेशन को हम वेट ऑपरेशन भी बोलते हैं और पी भी बोलते हैं, अप को हम सिग्नल भी बोलते हैं और बी भी बोलते हैं और रिलीज भी बोलते हैं, ठीक है? वी विल सी क्वेश्चन में। तो काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है? जो कोड है ना, बेसिकली कोड रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे डाउन होता है काउंटिंग सीमाफोर में, कैसे अप होता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द डाउन, द कोड ऑफ द डाउन, ठीक है? दिस इज द कोड ऑफ द डाउन, दिस इज द कोड ऑफ द डाउन, एंड दिस इज द कोड ऑफ द अप ऑपरेशंस काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है? डाउन बेसिकली द सीमाफोर एस, जो भी एस की वैल्यू होगी उसको पहले वन से डिक्रीमेंट करेगा, इट विल डायरेक्टली डिक्रीमेंट। और अगर वो वैल्यू जीरो से नीचे चली जाती है, दैट वैल्यू एस डॉट वैल्यू बिकम जीरो, लेस देन जीरो, इट मीन्स प्रोसेस को ब्लॉक करो, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी इनटू सस्पेंडेड लिस्ट। अगर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर एस की वैल्यू, सीमा फोर की वैल्यू जीरो से कम चली जाती, मीन्स ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी इनटू द सस्पेंडेड लिस्ट, एंड प्लेस इट्स पीसीबी इनटू द सस्पेंडेड लिस्ट मीन्स, और ये एक अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन माना जाएगा। दिस विल अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अब क्या होगा? अब ये होगा इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वन, उसके बाद चेक करो, अगर इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ हाँ, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एस, उसके बाद चेक करो अगर एस की वैल्यू जीरो है या जीरो से कम है। मीन्स व्हाट डज इट मीन लेस देन जीरो? इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रोसेस ब्लॉक है जिसके पीसीबी सस्पेंडेड लिस्ट में पड़े हैं। तो कोई भी प्रोसेस को सेलेक्ट करो और उसको बैकअप करो, सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट एंड द बैकअप। द अप ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, अप ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बट दिस विल रन, नॉट ब्लॉकिंग, वी आर नॉट ब्लॉकिंग दैट प्रोसेस, कोई प्रोसेस को ब्लॉक थोड़ी आ रहा है। बट डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है और अनसक्सेसफुल भी। अनसक्सेसफुल कब होता है? जब सीमाफोर वैल्यू बिकम लेस देन जीरो, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? और अगर मान लो जीरो है, अगर इंक्रीमेंट करने के बाद जीरो है, मीन्स लास्ट प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस बचा हुआ था, मान लो माइनस वन है, सीमाफोर की वैल्यू माइनस वन है, अप ऑपरेशन हुआ तो ये आ जाएगा जीरो। मीन्स एक ऑपरेशन ब्लॉक था, उसको अपने इंक्रीमेंट अप ऑपरेशन परफॉर्म करा, इट मीन्स इस प्रोसेस को उसमें से सेलेक्ट करो सस्पेंडेड लिस्ट में से और इसको बैकअप करो। दिस आर द सिंपल काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है? सो थ्योरी पढ़ लेते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द डाउन ऑपरेशन, if the process is not getting suspended, then it is called the successful down operation। अगर मीन्स डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर वो प्रोसेस सस्पेंड नहीं होता है, इट मीन्स द सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। इट इज सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, इफ इट इज अ सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, देन ओनली प्रोसेस विल कंटिन्यू फर्दर एग्जीक्यूशन। सही बात है, अगर वो जो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है ना, तभी वो प्रोसेस
फर्दर एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर पाएगा. आफ्टर परफॉर्मिंग द डाउन ऑपरेशन द प्रोसेस गेटिंग सस्पेंडेड देन इट इज कॉल्ड द अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन. अगर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है इट इज कॉल्ड द अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन. इफ इट इज अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन then the process will not continue the further execution. These are the very important points. These are the very important points, right? You may feel it is easy, definitely it is easy, but this is very important. While solving the problems you have to remember all these points. This is very important point, right? You will see these type of points in these similar points in the binary semaphore as well, right? So after performing in down operation, if the process getting suspended it is called the unsuccessful down operation. Okay, and if it is unsuccessful down operation then the process will not continue the further execution. Means अगर down operation unsuccessful हुआ है process further execution नहीं कर पाएगा. Okay, let's move the very important point, right? Very important point. Positive value of the semaphore. The positive value of the semaphore indicates the number of successful down operation we can perform. Means let's uh, value is 3, we perform the down operation 2, it will become 2, another it will become 1, another it will become 0, another it will become -1. So we can only perform the 3. ठीक है, 2 1 0 -1. If we perform, sorry, just 1 minute, we will perform on 0, it will become 2, we will perform on 0, 2 it will become 1, we will perform on 0, we cannot perform, this is the unsuccessful down operation. So we can perform only 3 to 1. 0 पे अगर हम डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं the semaphore value become minor negative. It means it is an unsuccessful down operation. In unsuccessful down operation the process cannot further execute, right? It cannot proceed further. So these are the 3 only. So basically this point is saying this only. Plus value semaphore indicates the number of successful down operation we can perform. Down operation on the counting semaphore will be the successful only initial value of the semaphore. हाँ, अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज 1 or greater than 1, then then the down operation will be successful. Definitely it is just a common sense, right? There is no unsuccessful up operation. Up operation में there is no unsuccessful because अगर प्रोसेस अगर एस की वैल्यू एस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन उस कंडीशन में देखो वो तो रन होना ही होना है. अप ऑपरेशन द इंक्रीमेंट ऑफ द एस इज राइट, वो तो होना ही होना है, वो तो इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा वो. बट द इफ कंडीशन इज ऑप्शनल, अगर वो है तो किसी भी प्रोसेस को बेकअप करने के लिए वो कंडीशन है. मीन्स लेस देन और इक्वल द वैल्यू एस or less than equal to 0, it indicates some processes are suspended जो कि जिनकी जो वैल्यूज है वो पीछे में पड़ी हुई है. दैट्स दिस इज द इंडिकेटिंग, राइट? सो देयर इज नो अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन. अप ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल. ठीक है, द प्रोसेस परफॉर्मिंग अप ऑपरेशन विल डेफिनेटली कंटिन्यू फर्दर एग्जीक्यूशन. दिस इज कॉमन सेंस, राइट? जस्ट अ कॉमन सेंस. ठीक है. So let's consider this. Consider the counting semaphore variable. This the value of s is plus 15. The various semaphore operation like 19p, 18p, 4p, 7p, 3p are the performing. Then what is the final value of the counting semaphore? Just final value of the counting semaphore means the s is initially plus 15. If we perform 19p operation means 19p means minus 19. ठीक है, P means down operation और B means up operation. +8 -4, ठीक है, और -4 +7 -4 और +7 और -3. P means down और B means up. ठीक है, up ये ऊपर लिखा है था. ठीक है, दिस इज द P means down और बी मीन्स अप. ठीक है, बी मीन्स अप. इसको रिलीज भी बोलते हैं, इसको सिग्नल और अप भी, और वेट को डाउन को वेट बोलते हैं. ठीक है, जस्ट रिमेंबर.
ठीक है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सीमाफोर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेस ब्लॉक्ड। सही बात है, नेगेटिव वैल्यू वही बात करेगी ना कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस ब्लॉक में। माइनस मीन्स द एक प्रोसेस ब्लॉक है, -2 मीन्स 2 प्रोसेस आर ब्लॉक। ठीक है, इन दिस सस्पेंडेड लिस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देख सकते हो तुम, इनिशियली द वैल्यू ऑफ द सीमा बाय द काउंटिंग सीमा फोर इज +1। ठीक है, let's process P1 will come and perform the P operation. P means down operation, it will become 0. This is successful. After that the process P2 will come and it will perform the P operation. The semaphore value is -1, become -1, which means unsuccessful. It will perform P operation, process P3 will perform the P operation. On -1 it will -2, it is unsuccessful. Means number of two processes are blocked, two processes in the block list. ठीक है, these are the things, these are the suspended list, these are the suspended list, suspended list. ठीक है, so consider the counting semaphore value as the various semaphore operation like 20p and 12b are performed. Then what is the largest initial value of the semaphore as, so that the one process will remains in block. अगर एक प्रोसेस को तुम्हें ब्लॉक रखना है, इट मींस द वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमाफोर शुड बी -1। द वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमाफोर शुड बी मींस जो भी है सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो -1 आनी चाहिए, राइट। तो क्या इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, जस्ट ओके, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा, ओके, जस्ट वन मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसको, ठीक है, जस्ट वन मिनट, ओके। सो एस पी -20 प्लस वी इट शुड इक्वल टू द -1। सो यहाँ से इनिशियल वैल्यू ऑफ निकल आएगी, एक प्रोसेस ब्लॉक रहेगा। ठीक है, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लेट्स अंडरस्टैंड द बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग द बाइनरी सीमाफोर वी कैन गिव द सॉल्यूशन टू द किसी भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन दे देते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड progress is also satisfied, bounded waiting is also satisfied। ठीक है, using the binary semaphore we can satisfy all the four conditions जिस जो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए चाहिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द बाइनरी सीमाफोर, जस्ट 1 minute गाइस। आई थिंक माय फ्रेंड इज वाचिंग। ओके, मानव भाई बाइनरी सीमाफोर समझ ले, काम आएगा। बाइनरी सीमाफोर आता नहीं होगा तेरे को, हालांकि समझ ले भाई, आया। ठीक है, अगर डाउट हो तो चैट में, ठीक है, डाउट हो तो चैट में, ओके। चलो भाई, लेट्स अंडरस्टैंड द बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, बाइनरी सीमाफोर, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कोड ऑफ द बाइनरी सीमाफोर डाउन एंड द अप। These are the very important and the most of the problem from the process synchronization will come from here only। and using the मतलब बाइनरी सीमाफोर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड यूजिंग द बाइनरी सीमाफोर ऑलमोस्ट हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन की किसी भी दो प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइजेशन प्रदान कर सकते हैं, जो कि चार कंडीशंस थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस एंड नो अजम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसर स्पीड। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाउन। मींस डाउन ऑपरेशन क्या होगा, डाउन ऑपरेशन क्या होगा, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है पेन, बस जस्ट 1 minute। ठीक है, डाउन, ठीक है, डाउन ऑपरेशन। फर्स्ट इन द डाउन ऑपरेशन जो भी एस की वैल्यू आएगी वो चेक करेगा, इफ इट इज 1, इफ इट इज अ 1, बाइनरी सीमाफोर में जो एस की वैल्यू है, जो सीमाफोर की वैल्यू, इट कैन ओनली 2, राइट, 1 0 और 1, आइदर इट इज अ 0 और इट इज अ 1। इफ इट इज अ 1, द बाइनरी the semaphore value is 1, it will set the binary semaphore value to the 0। ये 0 से सेट करेगा, ठीक है, 0 से सेट करेगा और बस डाउन ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। एल्स
अगर वो 1 नहीं है तो क्या होगी, वो 0 होगी। मींस द बाइनरी सीमाफोर इज वैल्यू इज ऑलरेडी 0। अगर तुम उस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली द प्रोसेस शुड गेट सस्पेंडेड, राइट, प्रोसेस शुड गेट सस्पेंडेड। तो बट बाइनरी सीमाफोर में दो ही वैल्यू हो सकती है, तो 0 और 1। तो अगर वो 1 नहीं है, इट इट मींस एल्स एल्स वो 0 है, 0 है, इसका मतलब सिंपली ब्लॉक द प्रोसेसेस, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स में इसकी सस्पेंडेड लिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी इन दी सस्पेंडेड लिस्ट, जो इसकी पीसीबी है वो सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो। ठीक है। अप ऑपरेशन क्या कहता है, अप ऑपरेशन ये कहता है अगर अगर कोई सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, मींस अगर द सस्पेंडेड लिस्ट, इफ द सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, देन वी विल सेट द वैल्यू इज 1। अगर मान लो कोई प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस ब्लॉक है, तो हम वैल्यू 1 सेट नहीं करेंगे ना। फर्स्ट फर्स्ट अगर मींस अगर द वैल्यू ऑफ द बाइनरी सीमाफोर इज 0, 0 इट मींस, तो हम सस्पेंडेड लिस्ट को चेक करेंगे। सस्पेंडेड लिस्ट में अगर कोई प्रोसेस, सस्पेंडेड लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, मींस सस्पेंडेड लिस्ट में कोई ना कोई प्रोसेसेस हैं जो ब्लॉक करे हुए हैं, उनमें से किसी प्रोसेस को एक को चूज करेंगे और उसको बैकअप करेंगे। मींस अनदर अब ऑपरेशन, अनदर अब ऑपरेशन आया, उससे पहले अप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले वी विल चेक द सस्पेंडेड लिस्ट। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी सस्पेंडेड है तो उसको बैकअप करेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक अप ऑपरेशन आ रहे हैं। कब 1 वैल्यू सेट करेंगे, जब सस्पेंडेड लिस्ट इंटू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करने। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अप ऑपरेशन आया सीधे 0 से 1 कर दिया, नो। इट तुम ये जब ही कर सकते हो जब सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, मींस कोई कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं है, कोई भी प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में नहीं है। ऑब्वियस कॉमन सेंस है ये। अगर तुमने बंद कर दिया और ऑलरेडी कोई प्रोसेस ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई ऑलरेडी ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये कैसे कर सकते हो। अगर, क्योंकि नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा अगले बार। ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। ठीक है, लेट्स रीड दिस, जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है। Okay. So after performing down operation, if the process is not getting suspended, if अगर हमने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा and process is not getting suspended, it is obviously it is a calling the down operation is the successful down operation, right? It is a successful down operation. If it is a successful down operation, then only the process will continue further execution, जो हमने पहले पढ़ा। अगर सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा, then only the process can continue the further execution, right? After performing the down operation, if the process gets suspended, अगर हमने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा और द प्रोसेस गेट सस्पेंडेड, देन इट इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। these are just points, but you should, this is very important by the way, तुम्हें थोड़ा समझ आना चाहिए, right? If it is unsuccessful down operation, then process will not continue the further execution. Important point. Down operation on binary semaphore will be successful only if the initial value of the semaphore is 1. सही बात है, अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ द बाइनरी सीमाफोर इज 1, देन ओनली द डाउन ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। अगर वो 0 हुई तो वो अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा और वो प्रोसेस है ब्लॉक कर दिया जाएगा। देयर इज नो अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन। अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन ना तो काउंटिंग सीमाफोर में था, ना बाइनरी सीमाफोर में। देयर इज नो अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन एंड अप ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। अप ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। द प्रोसेस परफॉर्मिंग अप ऑपरेशन विल डेफिनेटली कंटिन्यू द फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है, let's understand this, then we will solve this one problem, then this one, then this one problem, then important points related to this, then some problems, okay, some good problems, then we will move on to the classical problems. Okay, just 1 minute, just 1 minute. Mm-hmm. Mm-hmm. Just give me 1 minute, right?
Okay, I'm back. So I'm planning to stop the streaming now, and मैं हो सकता है कि मैं अभी लाइव आऊँ थोड़ी देर बाद, and we will continue our the revisions and also we will solve the process information question from the workbook. ठीक है, पहले तो अभी तो हमें रिवीजन कंटिन्यू करना है, जैसे अभी जब मैं लाइव आऊँगा we have to continue the revision. Already we have read we have revised almost the 12 pages all, and another 12 pages is left. So whenever I back I will first schedule, basically मैं आधा एक घंटे पहले शेड्यूल कर दूंगा, so you can कीप द नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, जो भी है. बट अगर मैं आज लाइव नहीं आता हूँ, डेफिनेटली मैं कल से तो सही समय पे आऊंगा, और आई विल फॉलो सम पोमोडोरो टेक्निक्स एंड समथिंग फॉर टू more productive and not taking too much breaks again and again. So we will follow like 40 minute and 10 minute, 40 minute study and 10 minute break. Yeah, 40 minute study and 5 minute break. Something technically techniques. And also one thing I wanted to say like yeah, I wanted to say लेट्स सी देखते हैं, करना पड़ेगा 3-4 घंटे डेली बैठना पड़ेगा, बैठ नहीं पा रहा, बट ठीक है, अभी देख तो दोबारा से लाइव आता हूँ मैं. ओके, because I have some urgent work, so I have to go. Bye.